हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तुम लोग का क्या खबर है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को क्या सिखाया था, कुछ न्यूमेरिकल्स किया था रिलेटेड तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, टुडे आई विल नॉट डू एनी न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, कुछ दूसरा डिराइवेशन दिखाएंगे। ओके, तुम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बिकॉज हाँ इन माई क्लास लास्ट क्लासेस मैंने तुमको बोला था फ्रॉम दिस चैप्टर, हाँ इन फाइनल एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल सी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर ऑफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर एंड फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तुमको न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, डेफिनेशन का भी आता है, मेनली तो न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। डिराइवेशन विल कम, लास्ट 5 इयर्स का पेपर देख लेना तुम लोग। हाँ, डिराइवेशन भी आता है। फास्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्रूफ किया था ना, टी इक्वल टू व्हाट 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना था। हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना था। टी हाफ के लिए 0.693 बाई के। ये हाँ ये डिराइवेशन ऑलरेडी आ गया है, 2 साल पहले ये भी आया था। ओके, प्रूफ दैट फॉर ए फास्ट रिएक्शन टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ओके, नाउ लेट्स सी। हाँ, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। फ्रॉम दिस देख लो। हाँ, द हाफ लाइफ पीरियड, ओके, द हाफ लाइफ पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। एंड देखो, एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, half life period is independent upon the initial concentration. This is suppose this is the initial concentration tha A naught. Okay, this is initial concentration. Okay, this is initial concentration था ना तुम लोग का। ओके, जनरली हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर ए नॉट दिस टर्म इज मिसिंग इन दिस इक्वेशन। ये टर्म यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। सो टी हाफ इज व्हाट, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड्स अपॉन के साथ डिपेंड करता है। सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉ ए ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट। हाँ, ये साइड एक जो एक ग्राफ एक ड्रॉ करो। हाँ, तुम लोग देखो, दिस इज टी हाफ। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ना देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिस इज ए नॉट। ओके, नाउ टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन ए नॉट। ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सो व्हाट इज शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफर शेप किमान हम, ग्राफर शेप तो ये हो ना तुम लोग चाह लो। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। ओके, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ, ओके, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल, ओके, कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तो टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ था ना, वो ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करना। ओके, नाउ लेट्स सी। हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन ए न्यू टॉपिक। एक कुछ दूसरा सिखाने जा रहे हैं ना। देखो, now let's see. Expression for the rate constant. Okay, for reactions of fast order from concentration of the reactants at two different times. Means what I'm going to show a expression, okay, at different times. Okay, for the expression will be related to rate constant. Rate constant का expression निकालेंगे हाँ at different time। ना देख लो। हाँ, देखो, for a fast order reaction, now let's say for a fast order reaction, हाँ I have already proved this one, k equal to 1 by t ln a naught by। ये एक्सप्रेशन मैंने तुम लोग को प्रूफ करके दिया था। हाँ, क्लास देख लेना, मैंने प्रीवियस क्लासेस देख लेना। हाँ, दिस इज ln 1 by t ln a naught by a। हाँ, आफ्टर दैट देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
kt, this into this. After that, remaining is what? ln a naught. Okay, after that, देखो kt, this will be how much? ln a naught minus ln what? ln a. Okay, clear है? This is the formula. Okay, formula क्या था? log a by b का b का formula क्या था? This is a by b means what? Log what? Log a minus log b. ये formula था कि नहीं? Okay, now this is this equal to this, indirectly what? This equal to this. अगर ऐसे लिखेगा log a by b means what? Log a minus log b. Okay, now देखो same ln a naught by a, and this is what? This is ln a naught minus ln a. Okay, after that देखो माइनस ln को इधर लेके आना, दिस विल बी हाउ मच? ln a, इसको इधर लेके जाना kt. ओके, रिमेनिंग इज व्हाट? ln a नॉट. समझ में आ रहा है? देखो इस पार्ट को इधर लेके आना, माइनस ln a इधर, नेक्स्ट प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस kt प्लस व्हाट? प्लस ln a नॉट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी. इसको देख लो. हाँ, इसको पूरा देख लो इसको. हाँ, देखो now let's see. Suppose at t equal to t1, then concentration A equal to A1. There are two times. One is t1 and then t2. At this time concentration is suppose A1. This is 1. And at time t this concentration is A2. Then just apply this to here. This is the first condition you have apply korba. Then what? This will be how much? This will be ln A1 minus how much? This is 1 minus k what? T1 means what? When time equal to T1, concentration कितना था? Concentration A1 equal plus what? Plus ln what? ln A naught. Okay? This is the initial concentration. Please remember, ये तो initial concentration था. And what? And give equation number 1. इसको equation number 1 दे देना. Next. Okay? And what? And at time t2 concentration is what? A2. So this will be what? You will get two equations. This is for time t1 and another is for time t2. Next तुम्हारा t2 करने रहा होगा. Next one. This is equation number 2. This is equation number 1. This is equation number 2. Okay, just apply this concept here. You will get two different equations. One is for time t1, another is for time t2. Okay, now 1 minus 2 करना, देख लो. Now 1 minus 2. Okay, 1 minus 2 करना means what? This minus this and what? This minus this. Next what? This will be this minus this. So next what? kt1 plus ln a naught. Okay, then now this will be what? This part minus करो तो this minus will go what? This minus will go to plus and then what? Next will be what? kt2 and this plus will be minus. This will be how much? ln. This is what? This is a naught. Again I repeat. हाँ, इफले साइड लो. मारो पहले सिखा देता हूँ. 1 minus 2 करना. 1 minus 2. This minus this. देखो. This minus this. Next this part. Okay. This minus will become plus and this plus will become minus. After that what? Which will be cancelled out? This part will be cancelled out. So remaining is the remaining देखो. Okay. ln a1 minus what? ln a2 equal to how much? Equal to इसको प्लस को पहले लिखना. kt2. 1 minute please. This is k what? kt2 minus what? kt1. Okay, this one and minus kt1. After that, okay, this will be how much? This will be ln a1. This is what? Log a minus log b means what? ln. And this is how much? This is ln 1 by how much? By ln a1 by ln 2. Next what? Ok will be common. Okay, so this will be how much?
T2 minus T1. Okay, now देखो ln A1 minus ln 2. You can write ln A1 by A2. From this K will be common. So this will be remaining what? T2 minus T1. Okay, इसको पहले लिखना. This equal to this means what? This equal to this को इधर लिखना. K है मास K T2 minus T1 equal to. Okay, remaining मैंने इसको इधर लिखा. इसको इधर लिखेगा ln A1 by A2. Okay, from this K will be how much? From this 1 by how much? 1 by T2 minus T1 and what? ln A1 by A2. Okay, K को इधर लिखना है. ये पार्ट तो नीचे जाएगा तो इधर लेके जाना है. तो कितना है? 1 by T2 minus T1. Okay, just convert into log में convert करना. So multiply by what? 2.303 by how much? T2 minus T1. Okay, this will be what? Log A1 by A2. Okay, please remember this expression. Okay, this is the expression for rate constant at two different time, at T1 and T2. And मैंने क्लास में सिखाया था to convert ln into log. ln को अगर log में convert करना पड़ेगा तो ये यूज रखना. ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना 2.303. ये था, ये फॉर्मूला यह था. व्हाट इज द फॉर्मूला? ln x इक्वल टू हाउ मच? 2.303 log what? log x. ओके, लास्ट क्लास में ये बोला था व्हाट इज ln क्या होता है, log क्या होता है. क्लास का वीडियो देख लेना तुम लोग. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. ओके, K equal to 2.303 by T2 minus T1 log A1 by A2. Okay, now let's see. Now I'm going to do a numerics. मैं एक तुम लोग को numerics दे रहा हूँ. हाँ, with the help of this formula you can do that numerics. तुम लोग को numerics कर सकते हो. Okay, this is for homework. तुम homework easy है, तुम ये formula apply कर देना, आंसर ही मिल जाएगा. टेक्स्ट बुक का numerics है ना, देख लो. पहले खुद करना, उसके बाद टेक्स्ट बुक से आंसर चेक कर लेना तुम लोग. Okay, now let's say reaction. Please see the question very carefully. Okay, the initial concentration of N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. ये नाम मैंने क्लास में सिखाया था कैसे. डाइनाइट्रोजन, दिस 5 मीन्स पेंटॉक्साइड इन द फॉलोइंग फास्ट ऑफ द रिएक्शन. ओके, दिस इज द फास्ट ऑफ द रिएक्शन. what is the initial concentration? 1.24 into 10 to the minus 2 mol liter in bath. At what temperature is 31 Kelvin. The concentration, okay, the concentration of N2O5. As the reaction progresses, the concentration of reactant will obviously change, na? The concentration and reactant concentration of reactant will be decreases. Okay, so after 60 minutes concentration, the concentration of N2O5 after 60 minutes. Okay, 1 minute, please, value is not there. After 60 minutes was, this is the value.
was 0.2. Okay, 0.20 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse. Okay, let's see. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse. Clear? Okay, calculate the rate constant for the reaction at 318 केल्विन. उसको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला दिया था ना, हिंट दिया था ना, तो एक फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था, हिंट. ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? K इक्वल टू हाउ मच? 2.303 T2 minus T1 log, this is what, A1 by A2. यूज दिस फार्मूला. ओके, यू विल गेट द आंसर. ये फार्मूला अप्लाई कर लो, तुम लोग आंसर ही मिल जाएगा. आफ्टर डूइंग दिस न्यूमेरिकल्स, प्लीज सी द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में ही आंसर मिल जाएगा. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. ओके, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर देख लेना करके. ओके, देख लो. हाँ, आई हैव ऑलरेडी प्रूव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, तुम लोग वीडियो देखो, वो था, ये था. टी के लिए कितना था? टी के लिए 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए. एंड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था? टी हैव इक्वल टू 0.693 बाई के. वो दो डिराइवेशन मैंने प्रूफ कर दिया था. हाँ, नाउ लेट्स सी. हाँ, टुडे आई एम टेल यू हाँ अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है देख लो. हाँ, देखो, दिस इज एस. हाँ स्टूडेंट, ये एस है. हाँ, देख लो. Now let's see. Can be used. हाँ, integrated rate equation can be used. हाँ, number one. हाँ, can be used to calculate. हाँ, knowledge to calculate order of reaction. Order of reaction. हाँ, with the help of integrated rate equation, हाँ, you can calculate the order of reaction. Number two. हाँ, calculation. Calculation of rate constant. Calculation of rate constant. Integrated rate equation can be used in determining the order of reaction and also what? Also calculate the rate constant. Rate constant भी calculate कर सकते हो. हाँ, means what? Equation क्या था? For a fast order reaction. For a fast order reaction. What is the equation? Equation क्या था? T equal to 2.303 by K log what? Log A naught by A. Okay, now let's see. If you know the value of A naught and A, अगर इसका value मालूम है n A n what n time, you can calculate the rate constant. तुम rate constant भी calculate कर सकते हो. मैंने न्यूमेरिकल्स में दिखाया था. हाँ, now let's see. And one important point from this you can calculate rate constant. इस equation से भी rate constant calculate होता है ना. And rate constant can also be calculated graphically. वो ग्राफ से भी आता है ना. देखो, हाँ, देख लो. You can calculate rate constant. हाँ, also from ग्राफ. हाँ, ना देखो, ये रखना. हाँ, देखो, देख लो. The rate constant can also be calculated graphically. Okay, now let's say. देखो. Okay, now देख लो. For a fast order reaction, we have, now let's see. Please remember this point. From integrated rate equation you can calculate rate constant and rate constant can also be calculated graphically. Now देख लो. देखो, ये देखो. एक मिनट.
ओके नाउ देखो हाँ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन comma we have okay this is the equation t equal to how much t equal to 2.303 by how much by k log what log a not by a ये तुमको प्रूफ किया था ना दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t ना देखो उसको ये लिखना दिस इंटू दिस इसको मल्टीप्लाई करना हाँ के टी ओके एंड इसको इधर लेके आना 2.303 ओके ना देखो हाँ देखो इसको इंटू करना हाँ के टी एंड 2.303 इधर लेके आना नीचे हाँ 2.303 ओके नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट रिमेनिंग पोर्शन इज ए नॉट बाय हाउ मच बाय ए क्लियर देख लो हाँ देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करो उसको नीचे लेके आया रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट दिस इज log a नॉट बाय ए नेक्स्ट व्हाट दिस इक्वल टू दिस व्हाट इसको इधर भी लिख सकते हो ना दिस इक्वल टू दिस मीन दैट व्हाट दिस इक्वल टू दिस है उसको इधर भी लिख सकते हो ना देखो log a नॉट बाय ए नेक्स्ट व्हाट दिस इज kt 2.303 ओके नाउ लेट्स सी हाँ देखो दिस इज व्हाट log a naught minus how much minus log what log a this is what log a remaining part is what remaining part is kt what this is 2.303 now देख लो हाँ ये देखो this is log a by b फॉर्मूला दिया था ना बहुत बार दिया तुम लोग को ना मैं बहुत बार दिया ये फॉर्मूला log what log a by b means what log a minus how much log b okay same हाँ log a not minus log a okay after that देखो हाँ देखो this is log a not okay now देखो means एक मिनट wait हाँ this is minus log a this part okay next this is kt okay 2.303 okay एंड इसको इधर लेके आना माइनस log what log a नॉट ओके ना देखो माइनस log a इसको मैंने इधर लिखा ओके दिस पार्ट प्लस इधर जाने से माइनस हो जाता है ना आफ्टर दैट देखो बोथ साइड हाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके देखना हाँ देखो क्या होता है देखो दिस इज log a दिस विल how much minus k 2.303 this is what this is t and what this will be log what log a naught now देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो दिस इज log a this will be what minus this will be what this minus go towards plus log a naught now let's say this equation को देख लो log a minus k by 2.303 t plus log a naught हाँ this equation is comparable हाँ to equation of a straight line what is the equation of a straight line equation क्या था y equal to what y equal to mx plus c okay now this equation can be compared with the equation of a straight line now let's see हाँ देखो ये equation देख लो हाँ ये equation देखो equation क्या था देख लो this is the equation देखो log what log a minus how much minus k 2.303 t log what log a naught clear now let's see huh? this equation ना देखो okay now let's see this equation is comparable to equation of a straight line huh?
Okay, now let's see. If you plot a graph between log n what? Log n and time t. Okay, now you will get a straight line. Now देखो. Okay. Log a n what? Log n what? Log n and time t. You will get a straight line. Okay. Now let's see. Slope. Slope is this one. Minus 2.303. Okay, now let's say again I repeat. If you plot this graph log a versus time, you get a straight line. Slope of this line is equal to this one. Okay, from this rate constant can be calculated. तुम ये rate constant calculate कर सकते हो. If you know the slope, just slope अगर तुमको मालूम है this into this, you will get the rate constant. Means what? From integrated rate equation, you can calculate rate constant, and from slope, from slope. This rate constant can be calculated. We get a slope is equal to minus k by 2.30. From this you can calculate rate constant. Means what? Graphically भी तुम लोग calculate कर सकते हो. Graphically भी calculate कर सकते हो. And please remember this graph in exam last 2-3 साल पेपर देखना. Generally graphs will काम सर ग्राफ आता है एग्जाम में. ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता है फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, एंड व्हाट, एंड एक ग्राफ दिया था ना हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन. मींस व्हाट? टी हाफ डिपेंड ही नहीं करते थे. वो ऐसा एक ग्राफ दिया था. देखो फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने एक ग्राफ दिया था. टी हाफ व्हाट? टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट. ग्राफ ऐसा था. ओके, ग्राफ याद रखना. स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस ग्राफ. ग्राफ एग्जाम में आता है, जस्ट ड्रॉ करने को बोलता है. नाउ रिलेटेड टू ग्राफ आई एम गोइंग टू गिव यू ए न्यूमेरिकल्स. एक न्यूमेरिकल्स करके दिखाता है रिलेटेड टू ग्राफ. नाउ देखो एक क्वेश्चन देख लो. और एक मिनट मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ. ये क्वेश्चन नहीं है. देखो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी. देख लो. देखो फॉर ए केमिकल रिएक्शन सपोज. नाउ देखो सपोज क्वेश्चन प्रॉब्लम इज दिस वन. फॉर ए केमिकल रिएक्शन द ग्राफ इज टी हाफ वर्सेस. नाउ लेट्स सी. The graph is T half versus initial concentration. Problem is this one. This is the initial concentration. Okay. For a chemical reaction, variation of half-life period with concentration is this graph. Okay. Now let's see. What is the order of reaction? Reaction का order कितना होगा? ना देखो. What is the order of reaction? Suppose question this one. Question 1. What is the order of the reaction? This is the order of reaction. And obviously this is what? This is obviously fast order. This is obviously what? This is obviously fast order. Okay, now let's say second. What is the unit of rate constant for the reaction? देखो suppose this one. What is the unit of rate constant? Okay, unit of rate constant for the reaction. This is rate constant. Unit for the reaction. Just मैंने तुमको एक क्वेश्चन बना के दिखाया. ऐसे एग्जाम में आया तो क्या हुआ? तुमको एक ग्राफ दे रहा है, तुमको बोला कि रिएक्शन का ऑर्डर देखना. देखो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ऑब्वियसली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ना. व्हाट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? फॉर ये यूनिट क्या होगा? देखो फॉर द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव व्हाट? फॉर द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. फास्ट ऑर्डर रेट कितना था? किंतु के ए. ओके,
from this K will be how much? From this K will be how much? Rate by how much? By A. So this is what? This is what is the unit of rate? Mole liter inverse second inverse. Concentration is what? Concentration is mole liter inverse. This will be cancelled. So this is what? This is second inverse. Okay, again I repeat. ग्राफ दिया है, बोलो कि हरिजा पूछ रहा है कि तुमको ऑर्डर क्या है. ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर. दिस ग्राफ बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट इज व्हाट? यूनिट इज सेकंड इनवर्स. ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में. और एक क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम लोग घर में ट्राई करना. मैंने ऐसा न्यूमेरिकल्स तुम लोग को कर दिया है. आई हैव ऑल्सो डन दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, नाउ देखो. फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये तुम लोग घर में करना. देखो प्रॉब्लम देख लो. क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन ओके. और एक केमिकल रिएक्शन. Okay, now let's see. For a chemical reaction, rate law is this one. Okay, now let's see. Number one question. Okay, now let's see. For this reaction, okay, now let's see. For this reaction, the rate law is given as follows. Rate equal to K A B square. Okay, this reaction के लिए rate तुम लोग को दिया गया है. First part is this one. How is the rate of reaction? How is the rate of reaction affected when the concentration of B is double? Okay, now let's say. This is the first rate ना. After now let's say after doubling the concentration you will get new rate. मैंने ऐसा न्यूमेरिकल्स बहुत किया है. तुम लोग मेरा प्रीवियस क्लासेस देखना, जितना मैंने क्लास किया था ना वो बहुत बार दिखाया था. दिस इज द मेन रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन. आफ्टर डबलिंग द concentration you will get the new rate. ना देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, घर में करना. R dash, this is R. ना देखो this is R. R dash will be how much? K A and what? This will be after doubling the concentration, this is 2B whole square. Now let's see. Concentration of B has been doubled. तो यहाँ पर 2 लिखना. Don't put here 2. तुम लोग यहाँ पर 2 मत लिखो. क्वेश्चन तो पढ़ो ना ठीक तरह से. B का concentration डबल किया. A को ताश मत करना तुमको. Now this is equation number 1 बनाना. This is 2 बनाना. तो after divided 1 by 2 तुम लोग 1 by 2 equal also divided 2 by 1 जो करो answer you will get the same answer. Okay, this is the equation number 1. equation 2 को 1 से डिवाइड करो तुमको इसका आंसर ही मिल जाएगा. सो डिवाइड करने से तुमको क्या मिलेगा? तुमको रेट विल बी how much? R dash will be obviously what? 4R मिल जाएगा. न्यू रेट विल बी what? न्यू रेट विल बी बिकॉज 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेट. जो न्यू रेट है ना वो पहला जो रेट था ना उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. एंड जनरल कॉन्सेप्ट, इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज. यदि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो तो रिएक्शन और रेट तो बढ़ाएगा है ना. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ A is taken in large excess. Now let's say if A is taken in large excess, okay, ये ज़्यादा ले लिया means what? This is a constant and this term can be also regarded as constant. This whole part will be constant. So order will be what? Order कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर order equal to 2. इसका आंसर 2 ही होगा ना. Again I repeat. इसका large excess में लिया. means what? इसका amount
second is constant, there is another constant, so this part is constant, so remaining order कितना होगा 2. This concept come from what? This concept come from pseudo first order reaction. I have already told about pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction क्या था? These are the reaction which appear to be of higher order और देखने में higher order लगता है, but actually follow what? Actually follow lower order kinetics. I have also given the hint of this. मैं तुमको hint दे रहा हूँ, हाँ तुम लोग करना घर में, हाँ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डू दिस, हाँ तुम लोग कर सकते हो ये. मैं बहुत सारा न्यूमेरिक्स किया था, ये तो इजी है. फर्स्ट का वो ये कॉन्सेप्ट है और सेकंड का ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लेके आना, तुमको ऑर्डर ये 2 मिल जाएगा. ओके